हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम सॉफ्ट गोल्डन स्मोकी लुक क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो हाय आई एम मोनिष्का एंड वेलकम बैक टू चैनल लविश्का। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद दिस हिलेरी रोडा का कंसीलर जो कि मैंने बहुत पहले खरीदा था एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। आप देख सकते हो थोड़ा सा पड़ा है, यू शुड नॉट वेस्ट इट, कम ऑन यार। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। So I will scoop this out with my fingers. I've already moisturized my skin, a little bit of moisturizer, and then let's pull this. ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज था मुझे जितना याद है, और आप अभी देख ही लोगे। Little product goes a long way, you see. अब देखना इससे पूरा फेस हो जाएगा। बेसिकली मैं इसको अपने फाउंडेशन और कंसीलर दोनों की जगह पे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये एक हाई कवरेज कंसीलर है। अब अपने स्विस ब्यूटी कद्दू की ब्रश से ब्लेंड, यू सी द कवरेज मैन, भाई भयंकर है, देखना ना। अभी मैं ये वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी सो दैट यू कैन सी द एक्चुअल ट्रुथ। सो राइट नाउ माई बॉडी इज एक्सट्रीमली टैन, तो मैं फॉरहेड पे बिल्कुल भी लगा ही नहीं रही हूँ। यू कैन सी मैंने थोड़ा बहुत लगाया था और उसके आगे मैं ऊपर कॉर्नर्स पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टर्न ग्रे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैंड है और ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड हो गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ड्रिल, राइट? सो लास्ट स्टेप इज टू कंसील दिस थिंग। सी द कवरेज मैन। आई थिंक ऊपर बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, सो आई एम गोइंग टू फेड दैट विथ माई फिंगर्स। ओके, आई थिंक आई लाइक इट। डू यू गाइज लाइक द कवरेज? आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड। और ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा महंगा वाला कंसीलर भी नहीं है। लुक एट दैट। ठीक है, अपने ने कंसीलर लगा लिया है। ब्लू हेवन की स्ट्रोक एंड शेप स्टिक से मैं फटाफट से कॉन्टूर कर लेती हूँ, जो कि थोड़ा सा गलत लग चुका है, बट दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। मैंने रैंडमली ही प्लेस कर दिया है, बट वी ब्लेंड इट इन लाइक नाइसली। चलो टाइम थोड़ा सा बचाते हैं। ये ब्लू हेवन का ही लिप एंड चीक टिंट है, उसको मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है। और ये ब्लश को भी एक साथ कर लें। मुझे नोज पे आज लगाने की इच्छा नहीं है, हर बार फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। सो लेट्स जस्ट ब्लेंड इन दिस टुगेदर। लुक एट दैट। ओके, ये डरावना लग रहा होगा। लेट्स ब्लेंड इन दिस। यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर पुट ऑन कर लेते हैं सो दैट डार्कनेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। जस्ट अ प्रायर डिस्क्लेमर, दिस कंसीलर creases very quickly, so make sure you set it with a good translucent powder or any loose powder. मैं ये शुगर के ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट पाउडर से फटाफट से अपने अंडर आइज और पूरा बेस सेट कर लूँगी। I'm kind of satisfied with my base. I'm using this mini portable and a very neutral palette from Wet n Wild and taking that transition shade and blending it into my crease. And now I'm taking a soft brown color and putting it in a V shape in my outer corner. Now I'm taking that gold shimmer shade and placing it in the front half of my eyes with a flat brush. Now applying the same brown eyeshadow under my eyes. Applying the waterproof Kajal from Sugar in my waterline. Time for eyeliner. I'm using this pen liner from Sugar.
and I'll just make a thin line close to my lash line and making the inner corner very precisely. And now I'll be making the wing, pulling out from the lower lash line and connecting it to the eyeliner. Time for mascara. I'm using this volumizing mascara from Sugar and just wiggling it out. For lipstick, I'm using this Much Me Not lipstick in the shade Fairy Berry from Sugar, and to lighten it I'm using the Magic Wand concealer from Sugar. 2,000 years later. After blending it for a while, I got this result, and to make it work I used this Swiss Beauty lip liner and it looks pretty nice. I was trying that Instagram hack to lighten the lipstick. You can definitely try out this hack. I'm also pairing it with lip gloss and you can see it is looking bomb. But I'm a brown girl and I'm applying this brown lipstick from My Glam, and this is how I complete my warm brown soft smoky subtle look. Do try this look in this festive season and don't forget to tag me. If you want more such tutorials, don't forget to subscribe to our channel. Happy festive season. Bye.